চলিতে আর বলিতে, কত চলিতে আর বলিতে, মুখে গাও হে যিশু নাম, মুখে গাও হে যিশু নাম, যিশু নাম মহানাম, যিশু নাম মহানাম, কত চলিতে আর বলিতে, কত চলিতে আর বলিতে, বিশ্বাসে বলো যিশু নাম, বিশ্বাসে বলো যিশু নাম, বিশ্বাসে বলো যিশু নাম, বিশ্বাসে বলো যিশু নাম, মুখে গাও হে যিশু নাম, মুখে গাও হে যিশু নাম, যিশু নাম মহানাম, যিশু নাম। পবিত্র করে এই নাম, প্রাণ ভরে বলো যিশু নাম, পবিত্র করে এই নাম, প্রাণ ভরে বলো যিশু নাম, মুখে গাও হে যিশু নাম, মুখে গাও হে যিশু নাম, যিশু নাম, যিশু নাম মহানাম, কত চলিতে আর বলিতে, কত চলিতে আর বলিতে, মুখে গাও হে যিশু নাম, মুখে গাও হে যিশু নাম, যিশু নাম মহানাম। অবিরাম গাও মধু নাম, এক সুরে বলো যিশু নাম, অবিরাম গাও মধু নাম, এক সুরে বলো যিশু নাম, মুখে গাও হে যিশু নাম, মুখে গাও হে যিশু নাম, যিশু নাম মহানাম, যিশু নাম মহানাম, কত চলিতে আর বলিতে, কত চলিতে আর বলিতে, মুখে গাও হে যিশু নাম, মুখে গাও হে যিশু নাম, যিশু নাম মহানাম, যিশু নাম মহানাম, কত চলিতে আর বলিতে, কত চলিতে আর বলিতে, কত চলিতে আর বলিতে, কত চলিতে আর বলিতে। Praise the Lord, Hallelujah. इतनी अच्छा गीत था, और हमें ये नहीं मालूम था कि आपका पत्नी जो है अच्छा सा बजाती भी है। तो ऐसे मालूम होने से हमारा, जब से हमारा मीटिंग शुरू हुआ है, डेली जो है भजन प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आशीष करे, वो अच्छा वरदान के लिए सो प्रभु के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। संजय ब्रदर फैमिली, अभी संजय का परिवार है, वो लोग गीत गाएंगे। तुम्बा, आप लोग गाने के तैयारी में है? मैंने कल बोला था ना गाने की। ओके ओके मम्मी, तो नेक्स्ट आपका है इसके बाद कल गाएगा।
ओके, नहीं तो कल गाएंगे, ठीक है। Praise the Lord. संजय brother. सभी को जय मसीह। जय मसीह की। Praise. परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को चढ़ाता हूँ। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को चढ़ाता हूँ। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को चढ़ाता हूँ। मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ धन्यवाद की भेंट देने के लिए। मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ धन्यवाद की भेंट देने के लिए। मेरा सहारा तू है यीशु, मेरा सहारा तू है यीशु, तुझको ही महिमा दूं, तुझको ही महिमा दूं। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को चढ़ाता हूँ। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को चढ़ाता हूँ। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को चढ़ाता हूँ। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को चढ़ाता हूँ। मेरे परमेश्वर मेरा चट्टान, तेरा वचन मेरी बाती। मेरे परमेश्वर मेरा चट्टान, तेरा वचन मेरी बाती। अंधकार मेरी ज्योति बने, अंधकार मेरी ज्योति बने। तेरी सदा जय जयकार हो, तेरी सदा जय जयकार हो। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को चढ़ाता हूँ। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को चढ़ाता हूँ। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को चढ़ाता हूँ। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को चढ़ाता हूँ। मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ धन्यवाद की भेंट देने के लिए। मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ धन्यवाद की भेंट देने के लिए। मेरा सहारा है
मेरा सहारा तू है प्रभु, तुझको ही महिमा दूं, तुझको ही महिमा दूं। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को चढ़ाता हूँ। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को चढ़ाता हूँ। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को चढ़ाता हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और सुंदर गीत के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सो परमेश्वर का पवित्र वेदी में मेरा दिल को चढ़ाता है, हालेलुया। तो वो गीत जो है आने वाले दिनों में भी एक गीत को दोबारा हम गाएंगे, लेकिन आज थोड़ा सा टाइम के अभाव के कारण जो है हम ज्यादा समय उसमें नहीं ले रहा है। एक अच्छा जो सुंदर एक गीत हृदय को स्पर्श करने वाला एक गीत है। हमारा पास्टर भी हमारा साथ आज लाइन में जो है ऑलरेडी जुड़ गया है। उससे पास्टर जो वचन बोलने से पहले हम लोग जो है प्रभु की आराधना में हम जाएंगे। हम जो है एक गीत गाकर जो है हम लोग सब जो है मिलकर जो है अपना घरों में ताली बजाकर जो है खुशी से आनंद से ये आराधना का गीत को गाकर जो है हम परमेश्वर को महिमा करेंगे। हालेलुया, प्रेज जीसस। Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. तो क्यों ना हम मिलकर एक मिनट ताली बजा के गाना गाकर प्रभु का दास और दासी हमारे बीच में आया हुआ है, उनको हम आगे का समय देना चाहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो सब लोग खुश है, हम विश्वास करती हूँ। क्यों ना हम आराधना में जाएगा, ताली बजा के स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। सब लोग जानते हैं गाना, तो हम मिलकर ताली बजा के गीत को गाकर प्रभु का महिमा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो ताली बजा के करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना बिंदी ऊपर जाती है, उतर लेकर नीचे आती। ओहो, प्रार्थना बिंदी ऊपर जाती है, उतर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना, ओ देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हाथ उठा के हालेलुया, हालेलुया। ओहो प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओहो आंखों की आंसू ऊपर जाती है,
खुशियाँ लेकर नीचे आती है, आंखों के आंसू ऊपर जाती है, खुशियाँ लेकर नीचे आती है। ओ प्रभु हमारा ईश्वे नन्ही नन्ही न ओ देखो हमसे करता है प्यार, प्रभु हमारा कितना ओहो देखो हमसे करता है, हाथ डाके हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलू। ओ प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है, ओहो प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार, हालेलू हालेलूया हालेलू ओ हालेलू हालेलू धन्यवाद, ओ हालेलू हालेलू। योग्यता से बढ़ के दिया ये अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया ये अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु। ओ मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु। हाँ मेरे प्रियो, हम मांगने से भी ज्यादा प्रभु हमको दिया हुआ है ना? है तो हाथ उठा के, अगर आप पूछने से भी अधिक रीति से प्रभु आपको आशीष किया है तो हाथ उठा के शाम के समय में प्रभु को बोलो, प्रभु हम मांगने से ज्यादा आपने हमको दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हम उसका कोई योग्य नहीं है, हम उसमें कोई योग्य नहीं है, लेकिन आपकी दया, आपकी कृपा परमेश्वर, मांगने से ज्यादा, एक मांगने से ज्यादा आभारी ओ प्रभु में, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। हाँ प्रभु, हम मांगने से भी ज्यादा प्रभु आपने हमें एक एक को दिया है प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु आज की शाम की जूम मीटिंग आपके हाथों में समर्पण कर रहा प्रभु, आपके हाथों में समर्पण कर रहा परमेश्वर। भारत की प्रभु अलग अलग कोने से जितना भी भाई बहन लोग परमेश्वर आज आपके सन्मुख इकट्ठा किया है परमेश्वर, एक एक को छू लीजिए परमेश्वर। अपने दास और दासी को अभिषेक से प्रभु आप इस्तेमाल कर लीजिए पवित्र आत्मा। हालेलुया। आपके पंखों के नीचे प्रिय दास और दासी को छिपा कर रख लीजिए। जो कुछ परमेश्वर आपने आज हमसे बातचीत करना चाहता है आपका दास और दासी के द्वारा परमेश्वर, हालेलुया। हमारा भारत का अलग अलग विभिन्न कोना में रहने वाले एक एक भाई बहन का जीवन में ओ परमेश्वर वो एक उत्साहित का कारण हो जाए परमेश्वर, वो धीरज का कारण हो जाए, ताकि आने वाले दिनों में परमेश्वर आपकी आगमन के लिए हम एक एक लोग तैयार हो सकेगा। यस फादर। तब प्रभु धन्यवाद, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज प्रभु का दास पास्टर जो और उनका वाइफ सिस्टर आशा हमारे बीच में आया हुआ है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पापा को आगे आने के लिए। और पापा उन लोगों को हमारे बीच में स्वागत करेगा, उसके बाद आगे का समय पास्टर वाइफ को हम देना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड।
Praise the Lord. Pastor, we are so happy to have you today with us for the Word of God, and sister especially spending time for worship also. जो पास्टर आज आप हमारे बीच में आया उसके लिए बहुत धन्यवाद आपको, और सिस्टर आशा को हमारे बीच में आने के लिए हम लोग प्रभु को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। Though we haven't seen in person so far, but you are so much connected to us. हम लोग व्यक्तिगत रूप में आपको नहीं देखा हुआ है, लेकिन आत्मिक रूप में हम लोग बहुत कनेक्शन में हैं। When we were in Australia, we could able to see your papa and had a wonderful talk with him. जब हम ऑस्ट्रेलिया में था तब आपका पापा को मुलाकात करने के लिए और बात करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। Through Pastor Joe Korean, my best friend, I had heard so much about you and your ministry. और पास्टर जो कुरियन मेरा दोस्त के द्वारा आपकी सेवागाई के बारे में हम लोग बहुत सुना हुआ है। Moreover, we could able to talk over the phone also many times. आप फोन से भी बहुत बात करने के लिए प्रभु ने I know that you have a wonderful ministry in Ernakulam. हम जानता हूँ कि आप लोगों को एर्नाकुलम में केरल में एक अच्छा सेवागाई प्रभु करने के लिए मौका दे रहे हैं। So dear children of God, we have a wonderful man of God today to deliver the word of God. Same time, his beloved wife, she is a wonderful worship leader also. तो आज मेरे प्रिय लोग हमको एक श्रेष्ठ प्रभु का दास हमारे बीच में है, और उनका पत्नी भी जो आराधना में प्रभु आने इसी दिनों में इस्तेमाल कर रहा है वर्शिप लीड करने के लिए, उन दोनों को हमारे बीच में आने के लिए हम बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। He is such a blessed man of God, having a great passion for the North Indian community. ये दास पास्टर जो को उत्तर भारत का लोग के ऊपर एक बड़ा चाहत और बुलावट परमेश्वर ने उनके हृदय में दिया हुआ है। That is why I know that in the midst of your busy tight schedule, when we informed you straight away without any excuse came forward. Thank you, Pastor. We welcome you. We warmly welcome you. So, dear believers, let us clap and welcome our dear Pastor to our midst today. तो क्यों ना हमारे विश्वासी लोग ताली बजा के प्रिय दास और दासी को आज का सेवकाई के लिए हम वेलकम करेगा। Hallelujah, Pastor. Hallelujah. Over to you. You know, Pastor, last nearly 3 months, we are continuously, this meeting is conducting. Yes. Actually, you know, I don't know today how many participants are there. Some of them, I think, already went for job. Usually 50 to 60 families supposed to join with. I think maybe some are maybe continuous meeting, maybe got stuck with some inconvenience. But anyhow, we will record it and we will make them to hear it the coming days also. Okay. These are people from different, maybe 7 to 10 states. They are joining and hearing the word. Actually, they all came here in CMC for the treatment. Through the treatment time only, Lord has helped us to catch them through our ministry in and out CMC ministry. And anyhow, they have a painful background. Through that painful CMC experience only, they came to the Lord. Now they are very lovely people. They have a great passion, heart for the word. And whatever Lord has laid in your heart, you can free to share it. May God bless you, Pastor. Please welcome. I think sister will lead the worship first. Yes, Praise the Lord. Yes, thank you. Yes, Father. Asha sister, it's time for you in the beginning. After that, Pastor Joe will continue. Okay, Thank you so much. Thank you. Jay Masiki. So happy, so privileged to be in God's presence. I was enjoying the presence of God in our midst. We are already in fire here. Hallelujah. Praise God. I'll translate. Okay, I'll translate. You speak. I'll do the translation also. Okay. Okay, fine. आज आप लोग के बीच में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया और आप सब लोग एक बड़ा आग में बैठा हुआ है, अभिषेक आग में बैठा हुआ है, वो देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। Praise the Lord. Just a minute. So that's good. Yes. Thank you, dear people of God, for inviting us into your midst.
प्रभु का दास लोग, दासी लोग, हमको आज आपका बीच में बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद। It is a privilege and an honor to be in God's presence along with all of God's people. Praise the Lord. हम लोग बहुत धन्य मौका समझता हूँ कि आप लोग के बीच में परमेश्वर का वचन को बांटने के लिए। आमेन। Yes, thank you, dear Sister Feba, and thank you, dear Pastor, for this invitation. We are so honored. फेबा सिस्टर और pastor, बहुत धन्यवाद हमको invite करने के लिए। We are privileged. I am not sure if all of you understand Malayalam, because I was just thinking you don't at all. No, they are completely North Indian community. We are the only people who understand. But okay. Wow. Okay, yeah. This is the first time I'm ministering to a totally Hindi-speaking crowd. Then. Amen. मेरा पहली एक्सपीरियंस होगा ऐसे एक उत्तर भारत का लोगों को बीच में सेवकाई करना, एक मलयाली होने के नाते एक उत्तर भारत के बीच में सेवकाई। Praise the Lord. Next step, God is elevating you to the next level. Praise the Lord. And, honestly saying, I love Hindi. The language Hindi is one of my favorites. I don't know to speak so well. हिंदी भाषा में बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन उतना मैं बात नहीं कर पा रहा है। Yes, but I can understand what you are saying. But since I don't use it fluently, I don't get to speak back. But I love Hindi. लेकिन आप लोग जो बात करता है मैं समझ पा रहा है, लेकिन मैं हिंदी अच्छी तरीके से नहीं जानने की वजह से मैं वापस आपको जवाब नहीं दे पा रहा है। Praise God. Thank you once again. I just want to give God the praise at this moment. And even at the beginning of this message session, let's look up to our Father and praise Him and give Him thanks because He's going to speak to us today. इस सुंदर मौका के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूँ। इस संदेश का प्रारंभ समय में क्यों ना हम सब लोग प्रभु की ओर हमारा श्रद्धा देगा और प्रभु को हम धन्यवाद देगा। आमीन। Praise the Lord. Oh, hallelujah. I'm going to sing a very familiar Hindi song, a very old song. Please forgive me if my translation is wrong, but I like all of you to join with me as we sing this song together. मैं एक पुराना हिंदी गीत गाना चाहती हूँ, लेकिन अगर उसमें कहीं जहाँ कुछ गलत होगा तो मुझे माफ करो, लेकिन जरूर मेरे साथ इस गाना को आप प्रभु को आराधना करने के लिए आप लोग मदद हो जाइए। Praise the Lord. And I pray that this song will bring a big revival, a big healing and a restoration and maybe anointing of God in our midst at this moment. और मैं ये विश्वास करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ कि ये गाना आप लोग के जीवन में एक बड़ा चंगाई, आप लोग के जीवन में बड़ा जागृति लेके आए। हालेलुया। हाथ उठा के प्रभु को हालेलुया बोलो। Praise the Lord. Amen. Shall we sing together? एक और बार हाथ उठा के हालेलुया। Praise the Lord. Amen. Oh, hallelujah. Can you unmute yourself? है मेरे मन प्रभु का कर धन्यवाद, ओ प्रभु का कर धन्यवाद, है मेरे मन प्रभु का कर धन्यवाद। और से गाइए, प्रभु का कर धन्यवाद, है मेरे मन प्रभु का कर धन्यवाद, ओ प्रभु का कर धन्यवाद, है मेरे मन प्रभु का कर धन्यवाद। उसके उपकारों के तेरे पापों को प्रभु ने क्षमा की, तेरे पापों को प्रभु ने क्षमा की, दूर किए और दी चंगाई, रोग तेरे दूर किए और दी चंगाई, प्रभु का कर धन्यवाद, है मेरे मन प्रभु का कर
धन्यवाद ओ प्रभु का कर धन्यवाद है मेरे मन प्रभु का कर धन्यवाद प्रभु के पावन नाम का कर धन्यवाद प्रभु के पावन नाम का कर धन्यवाद उसके उपकारों के लिए कर धन्यवाद उसके उपकारों के लिए कर धन्यवाद प्रभु का कर धन्यवाद है मेरे मन प्रभु का कर धन्यवाद ओ प्रभु का कर धन्यवाद है मेरे मन प्रभु का कर धन्यवाद प्रभु का कर धन्यवाद है मेरे मन प्रभु का कर धन्यवाद तेरे पापों को प्रभु ने क्षमा की तेरे पापों को प्रभु ने क्षमा की रोग तेरे दूर किए और दी चंगाई रोग तेरे दूर किए और दी चंगाई प्रभु का कर धन्यवाद है मेरे मन प्रभु का कर धन्यवाद अप्पा प्रभु का कर धन्यवाद है मेरे मन प्रभु का कर धन्यवाद ओ प्रभु का कर धन्यवाद है मेरे मन प्रभु का कर धन्यवाद प्रभु जी धन्यवाद ये मेरे मन प्रभु का कर धन्यवाद धन्यवाद आपको धन्यवाद यशुआ Oh, we love you, Jesus. We praise your holy name. Hallelujah, hallelujah. We honor your name. Hallelujah. Oh, we praise you. We honor you, God. Hallelujah. Oh, थाली बजाओ यीशु के नाम से. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. All glory and honor to Jesus. Amen. Hallelujah.
Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus, Lord. Praise God. Praise the Lord. I'm so privileged and happy to be with my brothers and sisters from North India today evening. So, आज आप लोगों के बीच में जो है होना जो मेरे जिंदगी का बड़ा सौभाग्य है. Deliverance Mission to Unreached എന്ന ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഈ മിനിസ്ട്രിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭാഗവാക്കാവാൻ കിട്ടിയതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. DMU मिनिस्ट्री के साथ जो है हमें भी मिलकर जो है भाग लेने के लिए एक अवसर दिया है. इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं. പാസ്റ്റർ ജേക്കബിന്റെ ബ്രദർ ജെയിംസ് അച്ചാനും ലിനിമാമയാണ് ഞങ്ങളോട് ഏറ്റവും അടുത്ത സൗഹൃദമുള്ളത്. पास्टर जेकब का भाई जो है जेम्स है और उनका पत्नी उनका साथ जो है मेरा अच्छा दोस्ती है. We've been to Pastor Jacob's house and we were so privileged to minister there at that house and also spend more time with Ammachi, Pastor Jacob's mother. Few years before. कुछ महीना पहले जो है हमें जो है पास्टर जेकब का केरला का घर जाने के लिए और उनके माँ के साथ जो है कुछ समय बिताकर अच्छा संगति करने के लिए प्रभु ने एक अच्छा सुंदर का मौका दिए थे. James Chan is a very good singer and more than that 10 വർഷം മുമ്പ് നടന്ന ഞങ്ങളുടെ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിൽ ജെയിംസ് ചാനും ലിമാമയാണ് സംഗീത ശുശ്രൂഷ ചെയ്തത്. Oh, praise the Lord. Hallelujah. So, पापा का भाई जो है जेम्स है वो अच्छा एक गायक है और पास्टर का 10 साल पहले जब उनका शादी हुई थी उस समय पर उनका उस शादी के सेवगाई में जो गाना गाने के लिए पापा का भाई जो गया हुआ था. And Pastor Jacob is so familiar to me through telephone and other media. Especially from when they went to Australia, and also Pastor Joe Kurian, my spiritual father, told the Lord about Pastor Jacob and his ministry. और जो पास्टर जेकब के साथ जो है मुझे फोन के द्वारा जो है कुछ बातें जो है हुआ था और पास्टर जो है जब ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था और जो मेरा एक दोस्त है पास्टर जो है जो कुरियन उनका साथ भी जो है उनके द्वारा भी अच्छा जो परिचित होने के लिए परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया था. Pastor Jomon Thomas and Feba Jomon, really happy to see you through online and very happy to know that you are doing an amazing ministry with your daddy. और जो पास्टर जोमोन को और जो मेरा वाइफ फेबा को भी धन्यवाद देते हैं. मिलकर जो है यहाँ पर जो ऐसे एक सेवागाई जो है करते हैं. Feba has called me a few days before and told about this meeting and gave me all the details, and other day also she reminded me. Thank you so much for that. या जो सिस्टर फीबा ने जो है कुछ दिन पहले जो है पास्टर को इस मीटिंग के लिए बुलाया था और दो दिन पहले इसके बारे में रिमाइंडर भी दिए थे. उसके लिए भी बहुत धन्यवाद देते हैं. ഫേബ ഇപ്പൊ ഹിന്ദി പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ എന്റെ വൈഫ് എന്റെ ആശം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇയാള് ഭയങ്കര പുലിയാന്ന് പറഞ്ഞു. So പുലി എങ്ങനെ ഹിന്ദി പറയാറുണ്ട്. तो जो मेरा जो दीदी ने जो यहाँ पर जो है गीत गा रहे थे उस समय पर पास्टर का वाइफ जो है पास्टर को बोल रहा था कि ये जो बहन है एक बहन जो बहुत अच्छी सी गाती है ऐसे बोला था. So let me tell you something. You are an anointed person. We can feel the presence of God when you sing and when you lead this meeting. आमीन. जो प्रभु ने जो है हम सबके अंदर जो एक अभिषेक दिया है उस अभिषेक को जब हम जो है ऐसे मिलकर प्रार्थना करने के समय पर उसके बारे में जो है हमें पता चलता है. Take this as a prophecy that God will use you in different countries and God will send you to different continents because you have an anointing which is making you to fly over the globe. So एक भविष्यवाणी के रूप से आप लोग जो ले सकते हैं. प्रभु आपको जो है और भी जगहों में अलग-अलग देश में और जो है कॉन्टिनेंट में भी जो है प्रभु के महिमा के लिए प्रभु जो है इस्तेमाल जरूर करेंगे. आमीन. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you. प्रभु आशीष करे. I am so happy that I am speaking to Hindi speaking people today. आज मैं बहुत खुश है मैं जो है हिंदी भाई बहनों के साथ में बात कर रहा हूँ. Even though I am an Indian and our national language is Hindi, I know only thoda Hindi. मैं एक भारतवासी हैं हमारा राष्ट्र भाषा हिंदी है लेकिन मैं जो है थोड़ा हिंदी समझता हूँ.
When I studied in the school, I stopped learning Hindi by standard 10. By SSLC, I stopped learning Hindi because it was such a difficult language for me to learn. जब मैं जो स्कूल में पढ़ते थे, जो 10वीं क्लास के साथ ही साथ जो हिंदी पढ़ना जो बंद कर दिया है, तो इसी कारण से जो आगे को कुछ भी सीख नहीं पाए हैं. ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നല്ലൊരു ഉഴപ്പൻ ചെറുക്കനായിരുന്നു. मैं जब स्कूल में पढ़ने के समय पर जो अच्छा लापरवाही का एक लड़का था. ഹിന്ദിക്ക് എനിക്ക് കറക്റ്റ് പാസ് മാർക്ക് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. हिंदी में सिर्फ मुझे जितना पास मार्क चाहिए उतने ही मार्क मुझे मिला था. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഹിന്ദിയിൽ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു 5 സെന്റൻസ് ഉണ്ട് കാണാതെ, ഏത് ഉറക്കത്തിൽ ചോദിച്ചാലും പറയും. अगर आज भी मुझे हिंदी में 5 सेंटेंस मुझे याद है, अगर आप पूछने से मैं बता देगा वो क्या है. അതിന്റെ റീസൺ ഞാൻ ആ 5 സെന്റൻസ് 100 പ്രാവശ്യം മുട്ട നിന്ന് ഇമ്പോസിഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ഹിന്ദി ടീച്ചർ എന്നെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. क्योंकि वो 5 सेंटेंस है, मेरा हिंदी का टीचर है, उस टीचर ने मुझे एम्बोसिशन जो है दिया, एम्बोसिशन लिखा था, वो भी घुटने में घुटना ठिकाकर जो है एम्बोसिशन जो है करवाया था. आ 5 सेंटेंस ഞാൻ പറയാം. गाय एक पालतू जानवर है, गाय हमको दूध देती है, गाय का दूध मीठा है, गोबर अच्छी गाद है, गाय हमको गोबर देती है. ഈ 5 സെന്റൻസ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും കാണാൻ അറിയാം. पास्टर ने अभी जो बोला गया ये 5 सेंटेंस है, उनको याद है, क्योंकि वो बातें जो है उनका जो हिंदी टीचर ने उनका घुटने में ठिका के जो है एम्बोसिशन जो है स्कूल में करवाया था, इसलिए वो 5 अभी भी याद है. But you know, we both love the language Hindi a lot. We listen to Hindi music, and my wife sing Hindi songs, and that is an amazing language. We love to learn more Hindi from now onwards. या हिंदी एक अच्छा एक भाषा है, और हम लोग जो है बहुत सारे जो हिंदी मसीह गीतों को हम सुनते हैं, गाने के लिए कोशिश भी करते हैं, क्योंकि उसके द्वारा जो है प्रभु का महिमा जो होना है. आमीन. So by this I am concluding the introduction. I am getting into the word of God and my experience. और इसी के साथ ही साथ जो है मैं जो है मेरा जो है जो इंट्रोडक्शन है, मैं यहाँ पर बंद कर जो सीधा जो है परमेश्वर को वचन की तरफ जो है जाना चाहते हैं. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിയോഗമുള്ള വിഷയം കണ്ണുനീരിന്റെ ശക്തി, the power of tears. आज मैं जो है आपके साथ जो है बात करने के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे एक विषय दिया है, वो है आपकी आंसुओं का शक्ति के बारे में बताना चाहते हैं. आमीन. എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം കരഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ്. तो आज मुझे सुनने वाला सारे लोग जो है कम से कम एक बार से ज्यादा रोया हुआ होगा अपने जिंदगी में. നമ്മൾ ജനിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാർ നമ്മളെ തല കീഴായിട്ട് പിടിച്ചോണ്ട് നിന്ന് അടിച്ച് കരയിപ്പിക്കും. अगर जो है जब हम जन्म हुआ है उस समय पर हम नहीं रोने से डॉक्टर लोग जो है हमारा पैर पकड़ के उल्टा खड़ा लड़का के हमें मारकर जो है रुलाएगा उस समय पर. സോ ഈ കരച്ചിൽ, കണ്ണുനീര് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. तो ये आंसू और जो है रोना ये हर एक लोगों का जिंदगी के साथ जुड़े हुए रहते हैं. ഇന്ന് ആ കണ്ണുനീരിന്റെ പവറിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. लेकिन मैं आज जो है उस आंसू का शक्ति के बारे में आप लोगों के साथ जो है बताने के लिए चाहता हूँ. आमीन. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്ന എക്സ്ക്രീറ്റ എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് കണ്ണുനീരിനെ. जो हमारा शरीर से जो बाहर जाने वाला जो एक पदार्थ है वो जो है आंसू. ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു എക്സ്ക്രീറ്റയാണ് വിയർപ്പ്, സ്വെറ്റ്. जो हमारा शरीर से बाहर को चले जाता है वो एक पसीना भी. ശരീരത്തിന്റെ ഒരു വിസർജ്യ വസ്തുവാണ് മൂത്രം, മലം, ഇവയൊക്കെ. जो हमारा शरीर जो है शरीर के अंदर से जो बाहर जाने वाला फालतू वाला चीज है हमारा जो टॉयलेट और जो हमारा पेशाब. അവയ്ക്കൊക്കെ എന്തുമാത്രം പവർ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാമില്ല. പക്ഷേ ഈ കണ്ണുനീരിന്റെ ശക്തി അപാരമാണ്, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്താണ്. या हमारा शरीर से जो है ऐसे फालतू जाने वाला पसीना, हमारा यूरिन और जो है टॉयलेट, उसका कितना शक्ति है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हमारी आंखों से गिरने वाला आंसू है उसके ऊपर जो है बड़ा शक्ति रहता है. हालेलुया. आमीन. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആരെങ്കിലും ഇന്ന് രാവിലെയും കരഞ്ഞിട്ടാണോ, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലും കരഞ്ഞിട്ടാണോ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്? This word is really speaking personally to you.
अगर आज सुबह भी और जो है बीते हुए दिनों में भी अगर आप में से कोई भी अगर रोया है तो आज शाम में ये वचन जो है मैं आपके लिए मैं बोल रहा हूँ. हालेलुया. आमीन. Hallelujah. Praise the Lord. ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ, നമുക്ക് 3 തരത്തിലുള്ള കണ്ണുനീരുണ്ട്. तो हमें 3 प्रकार की आंसू हमारे जीवन में आते हैं. ഫസ്റ്റ് കണ്ണുനീര് ബേസൽ ടിയേഴ്സ് എന്ന് പറയും, അതായത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കണ്ണുനീര്. जो पहला जो है जो आंसू है वो आंसू जो है स्वाभाविकता है, नहीं तो जो है बोल सकते हैं एक साधारण जो है आंसू है. നിങ്ങൾ ഈ മൊബൈലിനകത്തോട്ട് നോക്കി ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ഇപ്പം കണ്ണടക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്തു? तो आप लोग अपना मोबाइल के तरफ जो देखने के समय पर जो कितने बार आपने अपने आंखों को जो बंद करके खोला है? നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണി എത്ര പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ അനങ്ങി? तो आपकी आंख की पुतला है वो कितने बार इधर उधर जो है चला है? അതിനെ സഹായിക്കുന്ന കണ്ണുനീരിന്റെ പേരാണ് ബേസൽ ടിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കണ്ണുനീർ. उसी जो है आपका आंख की पुतला को इधर उधर चलने के लिए सहायता करने वाला वो जो है पानी है उसको बोलता है जो नॉर्मल में बोलता है नॉर्मल जो है आंसू. ആ കണ്ണുനീരില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ണടയ്ക്കാനും തുറക്കാനും പറ്റത്തില്ല. കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനങ്ങത്തില്ല. अगर वो आंसू जो है हमारा आंखों में नहीं होने से हमारी आंख की पुतली इधर जो है नहीं चलता है, हमें देखने में मुश्किल होता है. അതില്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കണ്ണുനീര്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ടിയേഴ്സ് ഡോക്ടേഴ്സ് രോഗികൾക്ക് നൽകുന്നത്. तो जब ये जो है आंसू जब हमारे आंखों में खत्म हो जाता है, तब जो है डॉक्टर्स वे एक आर्टिफिशियल जो है आंसू हमारे आंखों में डालते हैं. ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക, നിങ്ങളുടെ അനുവാദമില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ അറിയാതെ പോലും നിങ്ങളുടെ കണ്ണിനകത്ത് 24 മണിക്കൂറും ഈ ബേസൽ ടിയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. तो आपका बिना जानकारी के द्वारा और जो है आप बिना इजाजत देते हुए 24 घंटे में ये जो है आंसू आपकी आंखों में हमेशा भरा हुआ रहता है. आमीन. രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് കണ്ണുനീരിന്റെ പേരാണ് ഇറിറ്റേഷണൽ ടിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിരോധ കണ്ണുനീർ. और दूसरी प्रकार की जो है आंसू है वो आंसू जो है हमारी जो है आंखों को जो है सुरक्षा देने के लिए होता है. നമ്മൾ വെളിയിൽ കൂടെ പോകുമ്പോ പൊടി അടിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ കണ്ണ് പെട്ടെന്ന് അടയ്ക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യും. ഒത്തിരി പൊടി അടിച്ചാൽ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വരാറുണ്ട്, അല്ലെ? जब हम बाहर को जाते हैं, ज्यादा जो है धूल जब हमारी आंखों में लगने के समय पर हमारा आंख जो बंद होता है और बहुत सारा जो है पानी आंसू हमारे आंखों से गिरते हैं. നമ്മൾ സവോളയൊക്കെ അരിയുമ്പം, ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ അരിയുന്ന പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി വരും, ആണുങ്ങൾ അരിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വരും. അരിയുമ്പം നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വരാറുണ്ട്. जब हम प्याज को काटते हैं, खासतौर से पहली बार काटने के समय पर जो है ये प्याज काटने के समय पर बहुत सारा आंसू आंखों से आता है. ज्यादातर जब आदमी लोग जो है आंसू काटने के समय पर उनको भी ज्यादा आंसू आते हैं. ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിലൊക്കെ ബാച്ചിലറായിട്ട് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം തന്നെത്താനെ കുക്ക് ചെയ്യും. അപ്പം വീട്ടിൽ വെച്ച് അമ്മ കുക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇവിടെ തന്നെത്താനെ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം എപ്പോഴും സവോള അരിയുമ്പോൾ കണ്ണുനീര് വരും. അതിന് ഞങ്ങൾ ഹെൽമെറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചോണ്ടാ സവോള अरिഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത്. जब बैंगलोर में था पढ़ने के समय पर जो है वो अकेला खुद जो है खाना तैयार करता था. जब घर में होने के समय पर माँ होती है और खाना तैयार करने के लिए, और बैंगलोर में क्या करता था, जब प्याज काटने के समय पर हेलमेट लगाकर जो है प्याज काटता था ताकि आंखों से आंसू ना गिरे. അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണ്ണിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ഫ്യൂംസ് അകത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അതിനെ പ്രതിരോധിച്ച് വെളിയിലേക്ക് കളയുവാനായിട്ടാണ് ഈ കണ്ണുനീര് വരുന്നത്. ये आंसू इसलिए आता है क्योंकि हमारी आंखों के लिए जो अच्छा नहीं है ऐसा एक पदार्थ जब हमारे आंखों में जाने के समय पर ये आंसू के द्वारा हमारी आंख जो है सुरक्षा देता है ताकि हमारी आंख में कोई प्रकार का खराबी ना हो. ഈ രണ്ട് കണ്ണുനീരിനെ പറ്റി അല്ല ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാനുള്ളത്. लेकिन मैं आज रात को ये दोनों आंसू के बारे में आपको प्रचार नहीं करना चाहते हैं. മൂന്നാമത് വേറൊരു ടൈപ്പ് കണ്ണുനീരുണ്ട്. और जो तीसरा एक और जो है आंसू हमारे आंखों से आता है. ആ കണ്ണുനീരിന്റെ പേരാണ് ഇമോഷണൽ ടിയേഴ്സ്, വികാരഭരിതമായ കണ്ണുനീർ. और जो तीसरी वाला जो आंसू है वो आता है उसको इमोशनल यानी इमोशनल जो है आंसू हम कहा जाता है.
രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഇമോഷണൽ ടീയേഴ്സ് ഉണ്ട്. दो प्रकार की भावना पूर्वक जो है आंसू हमारे आंखों से गिर आता है. ഒന്ന് ദുഃഖം വരുമ്പോ നമ്മൾ കരയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വരും. ये पहली बात पहला है जब दुख का क्लेश जब हमारे जीवन पर आता है, हम जब रोने के समय पर आंसू आता है. രണ്ട് സന്തോഷത്തിന്റെ ആധിക്യം, ആ ജോയ് വരുമ്പോ അറിയാതെ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വരും. और दूसरा है बहुत सारा खुशी और आनंद को जब अपने जीवन में आता है, तभी जो है हम बिना जानते हुए भी हमारी आंखों से आंसू आएगा. आमीन. ഈ രണ്ട് കണ്ണുനീരിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. तो आज रात को ये दो प्रकार की आंखों की ये दो प्रकार की आंसू के बारे में आज शाम को हम देखने वाला है. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ ഇതിനെപ്പറ്റി കേൾക്കാൻ? आണെങ്കിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം, ആരും ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് പോകരുത്, ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാട്ടെ. या इस आंसू के बारे में सुनने के लिए अगर आप लोग इच्छा करता है और जो आप लोग जो बहुत ध्यानपूर्वक बैठिएगा, कोई भी बीच में जो है उठकर अपनी इस मीटिंग से बाहर ना जाइएगा. ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സോ ലിസൺ ഹിയർ വെരി കെയർഫുള്ളി. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ്, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ നറേഷൻ. वो मैं आज बहुत साधारण तरीके से बहुत हल्का रीति से आपको समझाना चाहता है, ताकि आप लोग जो है इस बातों को सही रीति से समझ पाए. പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. लेकिन जो है मुझे परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मैं मेरा जगह पर महसूस कर रहा हूँ. आमीन. മാത്രമല്ല എന്റെ അകത്ത് ആരോ സംസാരിക്കുന്നു, ആരോ നല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ചിലരോട് ദൈവാത്മാവ് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഈ വചനത്തിൽ കൂടെ സംസാരിക്കും. आमीन. सो आज जो पवित्र आत्मा मुझे ये यकीन दिला रहा है, इस वचन के द्वारा कुछ लोगों के जिंदगी में परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से बात करने के लिए भी चाहता है. आमीन. हालेलुया. അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാട്ടെ. तो इसलिए आप लोग जो है जहां पर भी बैठा है, बहुत ध्यानपूर्वक जो है इस संदेश को सुनिएगा. हालेलुया. आमीन. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിക്കാനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു. तो जब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर जो है डालने के लिए दिया है, ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്ന കണ്ടാട്ടെ. मैं जब ये बोलने के समय पर उस तस्वीर को आप अपने मन में लेकर आइएगा. യേശുവിനെ 39 അടി അടിച്ച് അവന്റെ പുറം കണ്ടാൽ ഉഴവുചാലു പോലെയായി. यीशु मसीह के शरीर के ऊपर जो 19 बार जो है कोड़े मारा है, और उनका पीठ जो है जैसे जमीन में हल चलाता है वैसे हो गए हैं. ഒരു വലിയ മരക്കുരിശ് യേശുവിന്റെ പുറത്ത് വെച്ചു കൊടുത്തു. एक बड़ा जो है लकड़ी का एक क्रूस जो है यीशु के पीठ के ऊपर जो दे दिया है. ഒരു 600-ൽ കൂടുതൽ പടയാളികൾ യേശുവിനെ മാറി മാറി ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് അടിച്ചു. और 600 से ज्यादा सिपाही लोग जो है यीशु मसीह को जो है छोड़ के मारते लगा. യേശുവിന്റെ തലയിൽ ഒരു മുൾക്കിരീടം വെച്ചു. और यीशु मसीह का सिर के ऊपर जो है एक कांटे का मुकुट को पहना लिया है. आमीन. Jesus was fully naked and he was crucified in between two thieves. और जो है परमेश्वर इस समय पर जो है नंगा था, और दो चोर के बीच में यीशु मसीह को जो है जो क्रूस में चढ़ाया गया था. യേശു ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കും ഇടയിലായിട്ട് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. और यीशु मसीह आकाश और धरती के बीच में जो है क्रूस में जो है लटका हुआ रह रहा है. ഇപ്പോൾ യേശുവിന്റെ മുഖത്തേക്ക്, ആ ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്ന യേശുവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവനെ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് പോലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല. अगर जो है ये तस्वीर में आप जो है यीशु को अगर देखता है, तो एक मनुष्य होकर जो है हम उसको नहीं देख सकते हैं. आमीन. आमीन. ആ ക്രൂശിൽ കിടന്ന് വേദന കൊണ്ട് പുളഞ്ഞ് അലറി നിലവിളിക്കുന്ന യേശു, तो उसी क्रूस में यीशु मसीह लड़का के जो है दर्द से वो जो चिल्ला रहा है. आमीन. യേശുവിന്റെ തലയിൽ അടിച്ച മുൾക്കിരീടത്തിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വരുന്ന ബ്ലഡ് യേശുവിന്റെ കണ്ണിൽ വീണു. പക്ഷേ കൈകൊണ്ട് തുടയ്ക്കുവാനൊക്കത്തില്ല. രണ്ട് കൈകളും രണ്ടാണികൾ കൊണ്ട് തറച്ചിരിക്കുകയാണ്. तो यीशु को जो कांटे के मुकुट को पहना दिया है, उसी कांटे के मुकुट से जो नीचे को आने वाला आंसू है यीशु की आंखों में गिर रहा है, लेकिन उनके हाथ उठाकर उस खून को जो पोंछने के लिए भी नहीं होता है, क्योंकि दोनों हाथों में बड़ा कील ठोकर जो है ऐसे क्रूस में लगाया गया है. आमीन. ആ ക്രൂശിൽ കിടന്ന് വേദന കൊണ്ട് പുളയുന്ന യേശുവിനെ ദാഹിച്ചു. പക്ഷെ അവന് നല്ല വെള്ളം കിട്ടിയില്ല.
പുളിച്ച രസം അവന് കുടിക്കാനായിട്ട് കൊടുത്തു. वो उस क्रूस के ऊपर जो है यीशु मसीह को जितना ज्यादा प्यास आया है, लेकिन उस समय पर भी लोगों ने उसको जो है अच्छा पानी नहीं दिया है, परंतु कड़वा का पानी को जो है पिलाया था. അവൻ വേദന കൊണ്ട് അലറി നിലവിളിച്ച് ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും ഒക്കെ നോക്കി, ഇഫ് someone can save me, ആർക്കെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമോ? ആരുമില്ലെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ജീസസ് looked up, മുകളിലേക്ക് നോക്കി. if God Father can save me from this pain. പക്ഷെ അവൻ കണ്ട വേദനാജനകമായ കാഴ്ച പിതാവ് പുത്രനിൽ നിന്ന് നോട്ടം മാറ്റിയിരുന്നു. क्योंकि उस समय पर जो यीशु मसीह क्रूस में इधर उधर जो देख रहा था, कोई भी उसको जो बचा सकता है, लेकिन उस समय पर जो है प्रभु जो है ऊपर की तरफ जो है देखा, लेकिन तब जो है परमेश्वर ने जो है अपना जो है दृष्टि यीशु मसीह के ऊपर से हटाया गया था. आमीन. നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആപത്ത് ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പനോ അമ്മയോ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാമെങ്കിലും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നോട്ടം മാറ്റിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാനസികാവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? അതിനെക്കാട്ടിലും ഭീകരമായിരുന്നു യേശു ക്രൂശിൽ അനുഭവിച്ചത്. क्योंकि जब हम लोग जो है कोई प्रकार का कष्ट और क्लेश में जो पड़े जाता है, उस समय पर हमारा माता पिता ये जानकर भी हमें जो बजाने के वजह जो हमसे दूर चले जाने से कितनी प्रकार का दुखों को हमें जो सहना पड़ता है, वैसे प्रकार का एक बड़ा जो है दुख जो है यीशु का जिंदगी का अंदर भी हुआ था. आमीन. Jesus became alone and he was isolated in his crucifixion. യേശു ഒറ്റപ്പെട്ടു അവന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിൽ. तो उसी क्रूस के ऊपर यीशु के साथ कोई भी नहीं दिया है. यीशु इतना मतलब अकेला हो गया है, एक सुनसान होकर जो अकेला हो गया है. He knows the pain of loneliness. Yes. तो यीशु को मालूम है अकेलापन का जो है दर्द कितने ज्यादा है करके यीशु को मालूम है. Yes. Amen. If someone is listening to me today, you feel lonely in your family, you feel lonely in your business, you feel lonely in your society. നിങ്ങളൊരു കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിലും ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, one thing is sure, look upon Jesus. നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഏകാന്തത ആർക്കും അറിയത്തില്ലെങ്കിലും യേശു അത് അനുഭവിച്ചത് കൊണ്ട് ആ വേദന എന്താണെന്ന് അറിയാം. शायद जो है आज जो मुझे सुनने वाला लोगों में से कोई भी व्यक्ति जो है ये अकेलापन का दर्द से जो जाता होगा, चाहे परिवार के अंदर रहता है, लेकिन परिवार से एक अकेलापन जो है एक अकेला मतलब अकेला हुआ है, ऐसे एक दर्द है. अगर अपने बिजनेस में जो है एक अकेलापन को महसूस करता होगा, मैं आपको बताना चाहता है यीशु के ऊपर आप दृष्टि लगाओ, क्योंकि जिस अकेलापन को आप आज महसूस करता है, यीशु मसीह भी ऐसे ही प्रकार का अकेलापन को अपने जीवन में जो है महसूस किया है. हालेलुया. ഓ, ഈ പിതാവ് പോലും അവനെ കൈവിട്ടത് കൊണ്ട് അവൻ നെഞ്ചത്തോട്ട് കൈവെക്കായിരുന്നെങ്കിൽ നെഞ്ചത്തോട്ട് കൈവച്ച് അലർച്ചേനെ. അവൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവൻ അലറി വിളിക്കുന്നു, എന്റെ ദൈവമേ, എന്റെ ദൈവമേ, നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്ത്? മൈ ഗോഡ്, മൈ ഗോഡ്, why did you forsake me? तो अगर जो क्योंकि यीशु अपना पिता भी जो है जब यीशु को जो छोड़ दिया है, तो अगर उनका हाथ वहां से हिला सकते हैं तो आप यीशु अपने हाथ जो है सीने पे रखकर जो है चिल्लाता था, लेकिन वहां पर जो है यीशु ऐसे बोला है, हे पिता मुझे क्यों छोड़ दिया है. മനുഷ്യർ നിങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞേക്കാം കേട്ടോ. सो मनुष्य कभी जो है हमें छोड़ सकते हैं. आमीन. The people whom you have trusted the most, they might have rejected you. जो जिस व्यक्ति के ऊपर आपने ज्यादा भरोसा रखा है, शायद वो व्यक्ति भी आपको छोड़ा भी होगा. आमीन. പക്ഷേ യേശു നിങ്ങളെ കൈവിടത്തില്ല. लेकिन यीशु आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा. ഒരാൾ കൈവിട്ടാലുള്ള വേദന എന്താണെന്ന് യേശുവിന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് he will not forsake you. अगर एक आदमी हमें जो है छोड़ने से हमें जितना दर्द लगता है, महसूस होता है, वो दर्द यीशु को मालूम है, इसलिए यीशु हमारे हाथ को कभी नहीं छोड़ेगा. आमीन. വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കുമോ? താൻ പ്രസവിച്ച മകനോട് കരുണ തോന്നാതിരിക്കുമോ? അവൾ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും മറക്കുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. वो वचन में ऐसे लिखा गया है, अगर जो एक माँ अपना बच्चे को भूल सकते हैं, लेकिन जो यीशु मसीह आपको कभी नहीं भूलेगा. आमीन. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, കണ്ടാലും ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട്.
और यीशु ने कहा है ये दुनिया के अंत तक जो है मैं तुम्हारा साथ सदा रहूंगा करके यीशु ने हमारे लिए वायदा दिया है। आमीन। So let me give you an assurance that if you feel you are left alone, if you feel no one is loving you, let me tell you something. Somebody called Jesus Christ, he will not leave you alone and he will not forsake you at all. अगर जो है आप में से कोई भी ऐसे सोचता है मैं अकेला है, मुझे मेरे साथ कोई नहीं है, तो मैं आपको मैं यकीन देना चाहता है यीशु हमारे साथ है, यीशु हमें कभी नहीं छोड़ेगा और जो है यीशु का जो है यीशु हमारे साथ हमेशा रहता है। आमीन। യേശു അങ്ങനെ ക്രൂശിൽ കിടന്ന് പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ചെയ്തത് എന്താണെന്നറിയാമോ? അവൻ ഇതാ സകലതും നിവൃത്തിയായെന്ന് പറഞ്ഞ് അലറി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് प्राणने विटू। और जो है यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जो है जो चिल्ला के जो है बोलकर जो है यीशु अपना जो है आत्मा को पिता के हाथों पर जो है समर्पण किए हैं। യേശു മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ചെയ്തത് അവൻ കരഞ്ഞ് തന്റെ ജീവനെ വെടിയുവാനിടയായി। तो यीशु जो है एक मनुष्य के रूप में जो है यहाँ पर जीने के समय पर यीशु ने आखिरी में क्या किया है? उन्होंने रोकर जो है अपने आंसू बहाकर जो है अपने प्राण को पिता के हाथों पर समर्पण दिया है। ആ സമയത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇതാ സകലതും നിവൃത്തിയായി, ഇറ്റ് ഈസ് ഫുൾഫിൽഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് അക്കംപ്ലിഷ്ഡ്, ടെറ്റലസ്റ്റായി എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശു പ്രാണനെ വിട്ടു। तो उस समय पर जो है यीशु रोकर जो है एक ही जो है बातें कहा है, ये सब कुछ पूर्ति हो गया है कहकर यीशु और जो यीशु ने कहा है। യേശു കരഞ്ഞ് പ്രാണനെ വിട്ടു, ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കട്ടെ। तो अभी आपका मन में यही रहना है यीशु मसीह रोया और जो है उसी आंसू के साथ अपने प्राण को पिता के हाथों पर समर्पण दिए हैं। അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യേശു അടക്കപ്പെട്ടു, മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു। तो उसके बाद यीशु का शरीर को जो है कब्रिस्तान में जो है दफनाया गया और तीसरा दिन में यीशु मसीह उस कब्रिस्तान से जी उठा। യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ആ ദിവസം യേശുവിന്റെ ശവശരീരം കാണുവാൻ മറിയ കല്ലറയ്ക്കെത്തി। जब यीशु उठने के बाद जो है यीशु का जो वहां पर मरिया है वो यीशु मसीह का डेड बॉडी को लाश को देखने के लिए वहां पर गया। യേശുവിനെ അവിടെ കാണാഞ്ഞത് കൊണ്ട് മറിയ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കല്ലറയ്ക്കൽ നിന്നു। लेकिन यीशु को वहां पर ना मिलने के कारण मरिया वहां पर रोते हुए वो कब्रिस्तान का दरवाजे पर खड़ा होते रहा। കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന മറിയയുടെ ഒരിക്കൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുക, മറിയെ നീ കരയുന്നത് എന്ത്? रोते हुए वहां पर खड़े होने वाला बहन जो मरियम के पास यीशु मसीह पुनरुत्थान पाकर आकर पूछ रहा है, मरिया तू क्यों रोती है? അത് ചോദിക്കാൻ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? तो उसी सवाल का मतलब क्या आप लोग समझते हैं? നീ എന്തിനാ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ? तू क्यों ऐसे रोती है? നിനക്ക് വേണ്ടിയും ഞാൻ ക്രൂശിൽ കരഞ്ഞ് എന്റെ ജീവനെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചതാണ്। मैं तेरे लिए भी मेरे जीवन क्रूस में जो है रोकर जो है मैंने समर्पण किया था। ഇനി നീ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കണ്ട। अभी तुम्हें जो है रोकर रहने का जरूरत नहीं है। ഈ സമയത്ത് യേശു സ്വർഗത്തിൽ പിതാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകുന്ന സമയമായിരുന്നു। तो इस समय पर जो है यीशु जी उठकर जो है अपने पिता के पास जाने वाला समय है। ആ സമയത്താണ് മറിയ ഈ കല്ലറയ്ക്കൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്। उसी समय पर जो है ये मरिया जो है ये कब्रिस्तान पर जो है रोती हुई खड़ी थी। എന്നാൽ യേശുവിന്റെ യാത്രയെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഘടകം മറിയയുടെ കണ്ണുനീരാണ്। और यीशु मसीह का ऊपर जाने वाला रास्ते को रुकने वाला एक ही चीज है, वो था मरिया की आंसू। യേശുവിന് മറിയയുടെ കണ്ണുനീരിനെ മറികടന്ന് പോകുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല। और यीशु मसीह को मरिया बहन की आंसू को पार कर जो है स्वर्ग में जा नहीं सकता है। आमीन। ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അറിയാമോ? നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, सो हमारा परमेश्वर का खूबी क्या आप जानते हैं? എന്റെ ദൈവത്തിന് സകലതും സാധ്യമാണ്। तो हमारा परमेश्वर को सब कुछ जो है मुमकिन है। പക്ഷെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് കരയുന്ന നിന്റെ കണ്ണുനീരിനെ മറികടന്നു പോകുവാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് സാധ്യമല്ല। जो व्यक्ति ईमानदारी से आंसू बहाकर प्रार्थना करते हैं उनके आंसू को पार कर यीशु कभी नहीं जाता है। आमीन। हालेलुया। മറിയേ, ഒരു ചോദ്യം, ഈ അണ്ഡകടാകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവും ഉടയവനും ദൈവത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ അരികിലേക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ
അവൻ യാത്രക്കിടയിൽ മറിയയുടെ അരിക്കൽ വരുവാൻ ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ, മറിയയുടെ കണ്ണുനീരാണ്. ये सारा जो है ब्रह्मांड को बनाया गया परमेश्वर का पुत्र जो है अभी अपना पिता के पास जाने के बीच में जो है मरिया के पास रुक गए हैं, इसलिए एक ही कारण है क्योंकि मरिया की आंसू वहां पर गिरने के द्वारा. आमीन. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി, നിന്റെ കണ്ണുനീരിന്റെ ശക്തി എന്തുമാത്രം ഉണ്ടെന്നറിയാമോ? आज मुझे सुनने वाला भाई बहन, आपको ये समझना है आपने जो आप गिराने वाला जो आंसू का जो मूल्य है कितना है करके आप समझना चाहिए. ഈ ഉലകത്തിന്റെ ഉടയവനായ മഹാദൈവത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഈ കണ്ണിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന കണ്ണുനീരിനുണ്ട്. आपके आंखों से गिरने वाला आंसू है, उस आंसू का ताकत इतना है ये पूरा प्रपंच को सृष्टि किया गया सृष्टिकर्ता को रोकने का शक्ति आपके आंसू में है. हालेलुया, हालेलुया, आमीन. അതുകൊണ്ട് കരയുന്ന ആരും ഓർക്കരുത് നിങ്ങൾ വെറുതെയാ കരയുന്നതെന്ന്. तो इसलिए रोने वाला कोई भी ऐसे मत सोचो मैं ऐसे फालतू में रो रहा है. आमीन. आमीन. നിന്റെ കണ്ണുനീരിന് ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. आपके आंसू का एक कीमत, एक शक्ति है. വേറൊരു ക്യാരക്ടറിനെ ഞാൻ കാണിക്കാം. ബേർഷേബ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരുഭൂമിയിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഇരുന്ന് കരയുക. दूसरा है बेर्शेबा जो है मरुस्थल में जो है एक बहन अकेला खड़ा होकर वहां पर भी रो रही है. ആളുടെ പേരാണ് ഹാഗർ. उस बहन का नाम है यानी उस स्त्री का नाम है हागार. ഈ ഹാഗാറിന്റെ മകൻ മരിക്കാറായി. अभी हागार का जो है बेटा है वो अभी मरने पर हो गए हैं. അവിടെ ആ ഹാഗാറിന്റെ മകന്റെ അപ്പൻ അല്ലെങ്കിൽ അബ്രഹാം അവളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു. अभी हागार का जो हागार का बेटे का पिताजी यानी अब्राहम हागार को अपना घर से जो है निकाल दिया है. ആ अब्राहम കൊടുത്തു വിട്ട അപ്പവും വെള്ളവും എല്ലാം തീർന്നു. अभी अब्राहम ने उनको दिया गया खाना पानी सब कुछ जो है खत्म हो गए हैं. They didn't have food or water for so many days now. तो उनके पास खाने के लिए पीने के लिए पानी बहुत दिन के लिए नहीं बचा था. And her son is about to die without any food or water. और अभी उनका बच्चा है बिना खाने से बिना पानी से अभी उनके आंखों के सामने मरने पर है. This mother couldn't see her own son dying without any food. और उनका माँ को जो है ये देख नहीं पा रहा था कि उनको सह नहीं पा रहा है अपना बच्चा जो है उनके आंखों के सामने बिना खाने से भूखमरी से मर रहा है. आमीन. എന്നെ കേൾക്കുന്ന അമ്മമാരെ, നമ്മൾ നൊന്ത് പ്രസവിച്ച മക്കൾക്ക് ആഹാരമില്ലാതെ മരിക്കാൻ പോകുന്ന ആ കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? प्रिय माँ लोगों से मैं बोलना चाहता है, जिस बच्चे को हमने दर्द से जो जन्म दिया है वो बच्चा जो है आपकी आंखों के सामने बिना खाने से यानी भूखमरी से मरते हुए आप लोग देख सकते हैं. സോ ഈ ഹാഗർ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ മകനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് she couldn't see he going to die, so she moved from that place and she started crying to God. और जो है हागार ने क्या किया है, इस बच्चे को जो है एक झाड़ी के पीछे रखकर जो है वो दूर जगह में थोड़ा चला गया क्योंकि इस बच्चे का मृत्यु को देखने का शक्ति जो है इनके पास नहीं रहा. आमीन. आमीन. അവൾക്ക് അവിടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കാൻ അവിടെ ആരുമില്ല. മരുഭൂമിയിൽ there is nobody there in that desert. So अभी हागार की आंसू को मरुस्थल में सुनने वाला कोई भी वहां पर नहीं है. Hallelujah. She was checked out of her house. अभी ये हागार जो है अपने परिवार से जो है उनको निकाला गया है. Yes. അവൾക്ക് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കൊടുക്കുവാൻ അവിടെ ആരുമില്ല. उनको एक बूंद पानी देने के लिए उस जगह में उनके लिए कोई भी नहीं है. അവൾ എത്ര ഉച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞാലും ആ കരച്ചിൽ കേൾക്കുവാൻ സമീപ പ്രദേശത്ത് ഒരു മനുഷ്യനില്ല. वो जितना चिल्लाकर रोने से भी उनके आसपास में जगह में उनका चिल्लाहट को सुनने के लिए कोई भी वहां पर नहीं है. അവൾ അവളെ ഓർത്തും അവളുടെ മകനെ ഓർത്തും കരയുക. वो हागार अपने आप को और जो उनका मरने वाला बच्चे को भी देखकर जो रो रहा है. Holy Spirit is speaking very strongly tonight that some parents are crying there for their children. Yes. मैं आज पवित्र आत्मा मुझे ये बता रहा है कि कुछ लोग जो है अपना बच्चों का भविष्य के बारे में बहुत रोते हैं.
Amen. ഇന്ന് രാവിലെയും നിന്റെ മക്കളെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞ മാതാവാണോ ഇതിനകത്തൂടെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്? तो आज सुबह भी अपने बच्चे के बारे में जो है बच्चे के बारे में रोकर आज प्रार्थना में आया गया बहनों मुझे सुन रहा है. Amen. നിന്റെ മക്കളുടെ മദ്യപാനം ഓർത്ത് നീ കരയുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ, ഒരു പിതാവാണോ? आपका बच्चे का जो है दारू पीने वाला स्वभाव के बारे में सोचकर आप लोग जो है रोया है. Amen. രാത്രിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ആരും കാണാതെ കരഞ്ഞ് നിന്റെ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് തലയിണ നനയ്ക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്നത്? जब रात के समय पर सोने के समय पर जो है कोई भी ना देखते हुए आप लोग जो रो कर आपका आंसू से आपका तकिया को जो है गिला किया गया बहन है या भाई है आप लोग. Amen. ചിലപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അറിയാതെ ഹൃദയം വിങ്ങിപ്പൊട്ടി കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരൊഴുകുന്ന വ്യക്തിയാണോ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്നത്? या कभी जो है गाड़ी यानी स्कूटर चला के जाने के समय पर जो है आप अकेला मन के अंदर रोकर जो है गाड़ी चलाते हुए आंसू गिराते हुए जाने वाला भाई है आप. നിങ്ങൾ കുളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ബാത്റൂമിനകത്ത് ആരും കാണാതെ ആ വെള്ളത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ അലറി കരഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണോ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ വചനം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? तो आज रात को मैं आपको बताना चाहते हैं आप लोग जो बाथरूम में जो है नहाने के समय पर जो है उस पानी गिरने के साथ ही साथ आपने चिल्ला के रोया गया व्यक्ति शायद ये वचन को सुनते हो. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തി ഹോസ്പിറ്റലിനകത്ത് ഇന്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റിനകത്ത് അഡ്മിറ്റ് ആയപ്പോൾ ആ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ വരാന്തയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നെഞ്ചത്തടിച്ച് കരഞ്ഞ വ്യക്തിയാണോ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? आपका प्रियजन जो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं और आईसीयू का दरवाजे पर आप लोग खड़े होकर रो कर जो रोया गया व्यक्ति आज मेरी इस बातों को सुन रहा है. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മ നിയോഗത്തോടെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. मैं आज वे पवित्र आत्मा की जो अगुवाई के कारण मैं आपको मैं बताना चाहता है. നിന്റെ കരച്ചിൽ കാണുവാൻ ആരുമില്ലെന്ന് നിനക്ക് തോന്നിയേക്കാം. शायद आप सोचेगा मेरे आंसू को देखने के लिए दुनिया में कोई भी नहीं है. കരഞ്ഞിട്ട് പ്രയോജനവുമില്ലെന്ന് നിന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയേക്കാം. शायद आप ऐसे भी सोचेगा रोने से कोई प्रकार का फायदा भी नहीं है. പക്ഷെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ദൈവമുണ്ട് നിന്റെ കണ്ണുനീർ തുരുത്തിയിലാക്കി വെക്കുന്നവൻ. लेकिन स्वर्ग में एक परमेश्वर है, उस परमेश्वर आपके आंसुओं को कुप्पी में जो है संभाल के रखता है. हालेलुया. You may not know how many drops of tears you shed, but God who created you, He knows how many drops of tears you shed while you are crying. तो आपको ये नहीं मालूम है आपकी आंखों से कितना ज्यादा जो है आंसू गिरा है, लेकिन आपके आंखों से जितना भी आंसू गिरा है उस आंसुओं को परमेश्वर अपना कुप्पी में जो है संभाल के रखा हुआ है. हालेलुया. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആ കണ്ണുനീരിനെ കാണുന്ന ദൈവം നിന്റെ അരികിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. तो आज मैं आपको बताना चाहते हैं आपके आंसुओं को देखने वाला परमेश्वर जो है आपके सामने आया हुआ है. आमीन. हालेलुया. ആ മരുഭൂമിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കരഞ്ഞ ഹാഗാറിന്റെ നിലവിളി ആ കണ്ണുനീര് സ്വർഗത്തിലെത്തി. तो वो मरुस्थल में हागार ने अकेला होकर जो है रोया है, उनकी आंसू जो है परमेश्वर के पास पहुंच गए हैं. ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ദൂതനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു. परमेश्वर ने स्वर्ग से एक स्वर्गदूत को धरती में भेजा. അവൾ എന്തിനു വേണ്ടി കരഞ്ഞോ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ആ ദൂതനെ അയച്ചു. तो उस हागार जिस विषय के लिए रोया है उसी जगह के लिए स्वर्ग से एक स्वर्गदूत को परमेश्वर ने भेजा है. हालेलुया. ഹാഗാർ തന്റെ മകന്റെ മരണം കാണാതിരിക്കേണ്ടതെന്ന് കരഞ്ഞെങ്കിൽ ആ ദൂതൻ ആദ്യം ആ മകന്റെ അരികിലേക്ക് ചെന്നു. तो हागार जो है अपने बच्चे का मृत्यु को देखने के लिए दूर में गया, लेकिन वहां पर जो है उस स्वर्गदूत उतर कर आया है. അവരെ മടിക്കാൻ കിടന്ന ആ മകനെ ആ ദൂതൻ താങ്ങി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിരുത്തി. तो उस मरने वाला बच्चे को जो है दूध आकर उसको उठाया और बिठाया. അവനിലേക്കൊരു ബലം പകർന്നു. उनका शरीर के अंदर जो है एक बल, एक सामर्थ्य प्रभु ने दिया. आमीन. ആ ദൂതൻ എന്നിട്ട് ഹാഗാറിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു. ये स्वर्गदूत जो है हागार के पास चले गया. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൂത് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്. तो आज रात को परमेश्वर के आत्मा एक संदेश में आपको दे रहा है. നിന്റെ അരികിലില്ലാത്ത എന്തിനോ വേണ്ടി നീ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ?
तो आपके साथ जो चीज नहीं है उसके लिए आप उस विषय के लिए आप अभी रो रहा है. ദൂരെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി നീ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? जो दूर में खड़े होने वाला व्यक्ति के लिए तू रो रहा है. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിന്റെ കണ്ണുനീര് കണ്ടിട്ട് സ്വർഗം ഒരു ദൂതനെ അവിടെ അയക്കാൻ പോകുകയാണ്. तो आज तेरी आंखों को आंसू को देखते हुए उसी जगह के लिए स्वर्ग जो है अपना स्वर्गदूत को वहां पर भेजने वाला है. आमीन. ഈ വചനം അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചോളൂ. तो इस वचन को ऐसे ही विश्वास करो. നിന്റെ കരച്ചിൽ വെറുതെ അല്ല കേട്ടോ. तो आपके आंसू फालतू नहीं जाएगा. आमीन. ഹാഗാറിനിരിക്കുക ദൂതൻ വന്നിട്ട് പറയാ, ഹാഗാറെ നീ കരയുന്നത് എന്ത്? तो हागार के पास स्वर्गदूत आकर ये कह रहा है, हागार तू क्यों रो रही है? അതേ ചോദ്യം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആവർത്തിച്ച് ചിലരോട് ചോദിക്കുകയാണ്. വൈ ആർ യു ക്രൈയിങ്? നിങ്ങൾ എന്തിനാ കരയുന്നേ? हागार को सवाल किया गया, वही सवाल आज परमेश्वर की आत्मा जो है आपसे भी कह रहा है, तुम क्यों रो रही है? ഹല്ലേലൂയ, ജീസസ് ലോർഡ്. ഞാൻ 4ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം, मैं जब 4 क्लास में पढ़ते थे, ഞാനൊരു ദിവസം സ്കൂളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എന്റെ വലത്തുവശത്തായിട്ട് ഒരു വേദന ഉണ്ടായി. मैं जब स्कूल में जाने के लिए लगा उस समय पर मेरा जो राइट साइड में जो एक बड़ा दर्द आया. Suddenly I was taken to a hospital. तुरंत मुझे जो है हॉस्पिटल में लेके गया. After so many examinations and tests, doctor has found that there is a bulging and a hole on my liver. और जो है बहुत सारा जो है चेकअप वहां पर करने के द्वारा उनको ये पता चला है मेरा लिवर में जो है थोड़ा सूजन है और वहां पर एक होल करके बोला. And this bulging and hole is expanding each hour. और जो है ये जो है सूजन और होल है वो एक समय पर वो बढ़ते हुए जा रहा है. Doctor told my father that this is a rare disease and there is no treatment for this in this hospital. What he can do is you can take this patient to home because this patient will die in few days time. और जो है उन्होंने उस डॉक्टर ने कहा है कि इस पेशेंट इसी बीमारी को, ये बीमारी ऐसे एक रेयर बीमारी है, इसके लिए कोई दवा नहीं है, आप अपने बच्चे को लेकर जो है घर जा सकते हैं क्योंकि उनके लिए काफी कोई चिकित्सा नहीं है. എന്നെ കോട്ടയത്തുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയി. they also left me. അവരും എന്നെ കൈവിട്ടു. मैंने जो केरला में कोटे नाम के एक जगह में एक मेडिकल कॉलेज है वहां पर मुझे लेके गया है, वो लोग भी मुझे छोड़ दिया. ഞാനൊരു കാര്യം ഇടയ്ക്ക് കയറി പറയട്ടെ, മനുഷ്യൻ നിന്നെ കൈവിടുമ്പോൾ നിന്നെ കയ്യിലേന്തുന്ന ഒരാളുണ്ട്, അതാണ് സർവശക്തനായ ദൈവം. हालेलुया. मैं आपको बीच में बताना चाहते हैं, लोग जब आपको छोड़ देगा लेकिन उस समय पर यीशु आपको अपने हथेली में आपको संभालेगा. हालेलुया जीसस. എന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ഞാൻ ഏകദേശം കിടപ്പിലാണ്. ഒരു 3 മാസമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കട്ടിലെ കിടക്കുകയാണ്. मुझे घर में ले आया है और 3 महीने तक जो है मैं ऐसे बिस्तर पर लेटा गया. My school principal told my father that don't send Job Jacob to school anymore because he may die in few days time, so we can't accommodate seeing that situation. और जो है मेरा स्कूल का प्रिंसिपल है, उन्होंने कहा है जॉर्ज को जो स्कूल में नहीं भेजना है क्योंकि कोई भी प्रकार की खतरा अवस्था आने से उनको वो सामना करने में बहुत तकलीफ होगा. ഈ സമയത്ത് എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ കരഞ്ഞ് ദൈവസന്നിധി നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. तो उस समय पर जो है मेरे माता पिता जो है रो कर जो है परमेश्वर से प्रार्थना में लगे रहा. മരിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ഇതാ അതിന് വിപരീതമായിട്ട്, മെഡിക്കൽ സയൻസിന് വിപരീതമായിട്ട് എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുക. जो बच्चा अभी मरने वाला है और उसी बच्चे के लिए नहीं मेडिकल साइंस के खिलाफ में जो है मेरे माता पिता प्रार्थना करना लगा. 3 മാസമായിട്ട് ഞാൻ മരിക്കുന്നുമില്ല ജീവിക്കുന്നുമില്ല, അങ്ങനെ ഒറ്റക്കടപ്പിൽ കിടക്കുക. और 3 महीना हो गया है, मैं ना मर रहा है या मैं जी रहा है, जैसे लेटा है वैसे लेटा है. ഈ സമയത്ത് എന്റെ പിതാവ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് പോയി. तो उस समय पर मेरा पिता जो है एक जगह में कन्वेंशन में प्रचार करने के लिए गया हुआ था. അദ്ദേഹം ബൈക്ക് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൺവെൻഷന് പോകുമ്പോൾ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ, ഒരു ടൗണില് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു വേദപുസ്തകമൊക്കെ ഇങ്ങനെ നെഞ്ചത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തുണിസഞ്ചിയും തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. और मेरा पिताजी जो है बाइक चलाकर जो है ऐसे प्रचार करने के लिए जाने के समय पर जो है वहां पर जो है रास्ते में एक सेवक जो है एक कपड़ा वाला जो झोला डालकर एक बाइबल को ऐसे हाथ में खड़े बाइबल पकड़ते हुए खड़े होते हुए देखा. പലരങ്ങനെ നിൽക്കാറുണ്ടല്ലോ, ശ്രദ്ധിച്ചില്ല വലുതായിട്ട്. യോഗത്തിന് പോയി പ്രസംഗിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി
जब क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे रास्ते में खड़े होता है, ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, लेकिन कन्वेंशन में गया है, प्रचार करके वापस लौटने के समय पर രാത്രിയിൽ ഏകദേശം ഒരു 10:30-11 മണിയായി. ആ സമയത്ത് കടകളൊക്കെ അടച്ചു, വണ്ടിയൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ബസ്സും പോയി, അവിടെ ആളുകൾ ആരുമില്ല. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ കണ്ട അതേ മനുഷ്യൻ അതേ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്റെ പിതാവ് കണ്ടു. और जो है अभी जो रात में लौटने के समय पर जो है 10 से ज्यादा हो गया है, दुकान सब कुछ बंद हो गया है, लास्ट बस से वो भी चला गया है, लेकिन ये आदमी जिस जगह में खड़ा हुआ था उसी जगह में खड़े होते हुए मेरे पापा ने देखा. എന്റെ പിതാവ് ബൈക്കിൽ മുമ്പോട്ട് പോയ ആള് പുറകോട്ട് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, എവിടെ പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ്? तो मेरा पिताजी जो है आगे जा गया है, फिर पीछे फिर बाद में घूम कर आकर उनसे पूछा, आप कहाँ जाने के लिए खड़ा है? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരാളെ പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. तो उन्होंने बोला है, मैं एक व्यक्ति को प्रतीक्षा कर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ. എന്റെ പപ്പ പറഞ്ഞു, ഇനി ആരും വരത്തില്ല, ലാസ്റ്റ് ബസ്സും പോയി, ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ, എന്റെ കൂടെ ബൈക്കിൽ കയറിക്കോ, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് കിടന്നിട്ട് നാളെ രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. तो उन्होंने बोला है, अभी कोई आने वाला नहीं है, लास्ट बस भी चला गया है, आप ऐसा करो, आप मेरे साथ मेरे घर में आ जाओ, रात में वहां पर ठहर जाओ, और कल सुबह जहां पर आपको जाना है आप जा सकते हैं. അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ കൂടെ ബൈക്കിൽ കയറി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നു. വീട്ടിൽ വന്ന് എന്റെ അമ്മ അത്താഴം കൊടുത്തു. അദ്ദേഹത്തെ ഒരു റൂമിൽ വിശ്രമിക്കുവാനായിട്ട് ആക്കി. അദ്ദേഹം ആ റൂമിൽ വിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. और जो है वो पापा और जो है ये भाई दोनों मिलकर जो है घर में आया है, और मेरा मम्मी जो है उसको खाना डिनर दिया है, और वो खाना खाया है. खाना खाने के बाद एक कमरे में वो जो है आराम कर रहा है. ഇതാരാ എന്തുവാന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ ഒരാള് ഒരു ഉപദേശി എന്നാ തോന്നിയത്, വേദപുസ്തകം പിടിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്രമിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പതിവുണ്ട്, രാവിലെ 5 മണിക്ക് പ്രഭാത പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. और जो है हमें उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो है वो भी एक पादरी है, वो उतना तो समझा है, इसलिए वो भी उसको लेकर आया है. और हमारे घर में एक खासियत है कि हर सुबह 5 बजे उठकर हम प्रार्थना करते थे. ഞാൻ കിടക്കുന്ന കട്ടിലിന്റെ അരികിൽ ഒരു പാവിരിച്ച് എന്റെ അപ്പായും അമ്മയും എന്റെ പെങ്ങളും കൂടെ പാട്ടുപാടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. और जिस रूम में जिस बिस्तर पर मैं लेटा है उसके सामने मेरे पापा मम्मी बहन जो है चटाई डालकर जो है वो प्रार्थना करना शुरू किए हैं. ഈ പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ട് അടുത്ത റൂമിൽ കിടന്ന ഈ മനുഷ്യനും കൂടെ ആ പായ വന്നിരുന്നു. तो ये हमारा गानों को सुनते हुए अगला कमरे में सोने वाला ये पादरी साहब है, वो भी जो है हमारा साथ में प्रार्थना के लिए आया. ആ പാട്ടിന്റെ അവസാനം ഈ മനുഷ്യൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അങ്ങോട്ട് നിറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ പിതാവിന്റെ നെഞ്ചത്തേക്ക് കൈവച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നിന്റെ മകന്റെ ലിവറിന്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ എന്റെ തള്ളവരിൽ തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. और जो है उस गाना के अंत में जो है पवित्र आत्मा में भरकर जो है वो पादरी साहब ने ऐसे कहा है, तेरा बेटे का लिवर का जो है समस्या है, उसको मैंने जो है मेरे हाथ रखकर जो है चंगा किए हैं. आमीन. ഈ സമയത്ത് എന്നിലേക്ക് ഒരു വലിയ ശക്തി ഇറങ്ങി വരുന്നത് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. और मुझे समझ में आया था, मेरे शरीर के ऊपर बड़ा एक शक्ति उतरते हुए मुझे महसूस हुआ. പക്ഷേ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ദൂത അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. लेकिन जो है ये बातें जो है कहा था, लेकिन उसको विश्वास करने में जो है बहुत कठिन बात था. ഈ മനുഷ്യൻ അധികം താമസിക്കാതെ ഇവൻ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി അദ്ദേഹം ബസ്സിൽ കയറി വീട്ടിൽ പോവാന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാപ്പിയെ കുടിച്ച് അന്നേരം വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകാനായിട്ടിടയായി. लेकिन ये आदमी जो सूरज उठने से पहले जो है कॉफी पीकर जो है अपना घर जाने के लिए चला गया है. അന്ന് എന്നെ വീണ്ടും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു ചെക്കപ്പ് നടത്തി. उस दिन में मुझे फिर हॉस्पिटल में लेके गया है, और मुझे फिर दोबारा चेकअप कराया. ഡോക്ടറെ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ കുറിച്ച് വെച്ചു. ഒന്നാമത്തെ സ്കാൻ കഴിഞ്ഞ റിസൾട്ട് കിട്ടിയ ഡോക്ടർ 2-3 പ്രാവശ്യം സ്കാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു. और जो पहला जो है जो स्कैन का रिपोर्ट मिला है उसके बाद दूसरा तीसरा बार भी ऐसे स्कैनिंग करवाया था. ആ 3 റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ട് ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഹോളും ഈ ബൾജിങ്ങും ഈ സ്കാനിന്റെ റിസൾട്ട് കാണാനില്ല, എന്തോ ഒന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. हालेलुया. और जो है उसी रिजल्ट को जो देखकर जो डॉक्टर ने बोला है, ये जो है पहले उसके इससे पहले वाला स्कैनिंग में भी जो बल्जिंग दा होल था, लेकिन अभी किया गया ये स्कैनिंग में वो बल्जिंग भी नहीं है, सूजन भी नहीं है, या उस होल भी उसकी शरीर पर नहीं है. അന്നേരവും എന്റെ പിതാവിനും മാതാവിനും അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എന്നെ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു. പതുക്കെ എനിക്ക് ആരോഗ്യം വെച്ചു തുടങ്ങി. लेकिन मेरा माता पिताओं को उसको विश्वास करने में बहुत कठिन था, लेकिन मुझे घर में लेकर आया, लेकिन धीरे धीरे मेरे शरीर के अंदर मुझे ताकत होने लगा.
4ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൃപയാൽ ഇന്നും മരിച്ചിട്ടില്ല, ജീവനോട് ഇരുന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാം. मैं जो 4 क्लास में पढ़ रहा था उस समय पर जो है मैं मर जाएगा करके बोला था, लेकिन इतना साल हो गया है, लेकिन मैं अभी तक जो है नहीं मरा है, जिंदा है. ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देते हैं. അതിനുശേഷം ആ മനുഷ്യനെ കാണാൻ പലയിടത്ത് അന്വേഷിച്ചു. उसके बाद जो है ये पादरी साहब को मिलने के लिए बहुत जगह में हम उसको ढूंढा. പലരോടും ഇങ്ങനൊരു മനുഷ്യനെ പറ്റി എന്റെ പിതാവ് സംസാരിച്ചു. उसी पादरी साहब के बारे में मेरे पिता ने बहुत सारे लोगों के बीच में जानकारी लिया. ഇന്നു വരെ അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടില്ല. आज तक जो है उस मनुष्य को हमने अपना आंखों में नहीं देखा है. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, मैं विश्वास करता हूं, എന്റെ മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും കണ്ണുനീര് കണ്ടിട്ട് ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ ഒരു ദൂതനെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചതാണ്. मैं विश्वास करता है मेरे माता पिताओं का जो प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर ने स्वर्ग से अपना स्वर्गदूत को मेरे लिए वहां पर जो है उतारा था. हालेलुया. ഇന്ന് രാത്രിയിലും കരയുന്ന നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ദൂതന്മാരെ അയക്കാൻ പോകുകയാണ്. वो परमेश्वर जो है आपके लिए स्वर्गदूत को भेजने वाला है. നിന്നെ കൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ മേലാത്ത മേഖലയിലേക്ക് ദൈവം മീഖായേലിനെ അയക്കാൻ പോകുകയാണ്. जिस एरिया में आप जो है अकेला जो है काम कर नहीं सकता है, उसी जगह में परमेश्वर अपना स्वर्गदूत मिखाएल को वहां पर भेजेगा. ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന ചിലർക്ക് സദ്വാർത്ഥിയമായിട്ട് ദൈവം ഗബ്രിയേലിനെ അയക്കാൻ പോകുകയാണ്. जो लोग दुख में बैठा है, निराशा में बैठा है, उनके लिए एक खुशखबरी के द्वारा स्वर्गदूत जो है गब्रिएल को वहां पर जो उतारेगा. आमीन. ഇത് എന്റെ അനുഭവമാണ്, ആർക്കും ഇതിനെ കണ്ണിക്കാനൊക്കത്തില്ല. ഒരു ദൂതൻ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് എന്നെ സൗഖ്യമാക്കിയത് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ കണ്ടതാണ്. क्योंकि ये मेरा अनुभव है, एक स्वर्गदूत मेरा घर में अंदर मेरे घर में आकर मुझे चंगा किया था. हालेलुया. ये मेरा अनुभव है. എന്റെ ദൈവം അത്ഭുതത്തിന്റെ ദൈവമാണ്. तो आज रात में भी परमेश्वर जो है अद्भुत वाला परमेश्वर है. കരയുന്ന നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഇറങ്ങി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ദൂതനെ അയക്കും. जो रोने वाला आपके लिए परमेश्वर खुद आएगा, नहीं तो यीशु प्रभु अपना स्वर्गदूत को भेजेगा. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ എന്റെ ഈ പ്രസംഗം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. तो आज मैं मेरी इस प्रचार को मैं बंद करना जा रहा है. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട്, जो प्रकाश वचन में एक वचन है, അവൻ നിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരൊക്കെയും തുടച്ചു മാറ്റും. प्रभु आपकी आंखों से सारी आंसुओं को पोंछ डालेगा. എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ നമ്മൾ കർത്താവിനെ കാണുമ്പോൾ, നമ്മളും കർത്താവും കൂടെ ഒരുമിച്ചുള്ളപ്പോൾ കർത്താവ് जब हम और परमेश्वर के साथ मिलन होगा, उस समय पर हमारी सारी आंसुओं को प्रभु पोंछ डालेगा. അപ്പോ ഒരു ചോദ്യം, സ്വർഗത്തിൽ കണ്ണുനീരുണ്ടോ? क्या तब पूछेगा क्या स्वर्ग में आंसू है क्या? ആ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് ബോധ്യമായത് ഇങ്ങനെയാണ്. तो उसी वचन का मतलब प्रभु के आत्मा ने मुझे ऐसे समझाया है. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും എന്നെ എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ടുവിട്ടപ്പോൾ എന്റെ അമ്മ കരയുന്നത് കണ്ടു ഞാൻ. मैं जब इंग्लैंड में पढ़ने के लिए जाने के समय पर मुझे एयरपोर्ट में छोड़ा गया, उस समय पर मेरी माँ रोते हुए मैं देखा. അത് മനസ്സിലാക്കാം, മകൻ വിട്ടിട്ട് പോവുക, ഇനി എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാ തിരിച്ചു വരുന്നേ, ആ സങ്കടം കൊണ്ട് കരയുക. क्योंकि वो तो जायज है, क्योंकि बेटा अभी विदेश जा रहा है पढ़ने के लिए, छोड़ के जा रहा है, इसलिए वो दुख से वो रोती है. ഒരു 1.5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവധിക്ക് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ്. और जो 1.5 साल के बाद मैं छुट्टी के समय पर मैं घर में आया है. ഈ സമയത്ത് എന്റെ അപ്പായും അമ്മയും എയർപോർട്ടിൽ വന്നിപ്പുണ്ട്. तो उसी समय पर मेरे पापा मम्मी जो है एयरपोर्ट में आया है मुझे स्वीकार करने के लिए. അവരിങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ലഗേജും ഒക്കെ കയറ്റി ട്രോളിയൊക്കെ ഉന്തി എന്റെ അപ്പാടെ അമ്മയുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഞാൻ വന്നു. और जो है वो लोग ऐसे वहां पे एयरपोर्ट में खड़ा है, मैं अपना सामान सब कुछ लेकर जो है ऐसे बाहर को आ रहे थे. എന്റെ അപ്പ എന്നെ ഓടി ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. और मेरा पापा दौड़ के आकर मुझे गले लगाया. രണ്ടാമത് എന്റെ അമ്മ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. वो दोबारा मेरा मम्मी आकर मुझे गले लगाया. കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ നെഞ്ചു ഭാഗത്തായിട്ട് ഒക്കെ നനഞ്ഞിരിക്കുന്നു. और जो है ऐसे गले लगाने के बाद मैं देखा मेरा जो सीने के साइड में पूरा जो है गीला हो गए हैं. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ അമ്മ കരയുക നിന്നുകൊണ്ട്. तो मैं जब देखा तो मेरा माँ जो है टूट कर वहां पर रो रही है. പോയപ്പം കരഞ്ഞത് മനസ്സിലായി, സങ്കടം കൊണ്ടാ കരഞ്ഞത്. जब जाने के समय पर रोया वो तो समझ में आया है, क्योंकि जाने के समय पर दुख इसलिए रोया है. പക്ഷെ വന്നപ്പോ എന്തിനാ കരഞ്ഞത്?
लेकिन मैं वापस घर में आने के समय पर मेरी मम्मी क्यों रोई है? ആ കണ്ടതിലുള്ള ഇത്രയും നാളും കാണാതെ നോക്കി ഇരുന്നിട്ട് കണ്ടപ്പോ ഉള്ള സന്തോഷം കൊണ്ട് എന്റെ അമ്മ അന്നേരം കരുതി. क्योंकि इतना साल से अभी मेरा बेटे को नहीं देखा है, जब बेटे को मिलने के समय पर खुशी से जो है वो रोया है, खुशी का आंसू है. ഇതുപോലെ തന്നെ 2020 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്റെ പ്രാണപ്രിയൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ തന്ന യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോയതുപോലെ വീണ്ടും വരും. क्योंकि 2020 साल पहले जो है मेरे लिए जीवन दिया गया, यीशु ने कहा है मैंने जैसे गया है मैं वैसे मैं वापस आएगा. ഇതുവരെയും വന്നിട്ടില്ല. നമ്മൾ നോക്കി നോക്കിയിരിക്കുക, ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. हम लोग जो है उसको दृष्टि लगाकर हम देखते रह रहा है, लेकिन अभी तक यीशु नहीं आया है. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എന്റെ പ്രാണപ്രിയം വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. मैं ऐसे आशा करता है आज रात के समय पर यीशु आने से कितना अच्छा था. എന്റെ യേശു മാനത്തിൽ അധികം താമസിക്കാതെ പ്രത്യക്ഷനാകും. अभी जो है हमारा यीशु मसीह है, फिर बादलों पर आने का समय बहुत निकट है. ആ സമയത്ത് യേശു വരുമ്പോൾ എന്റെ ആഗ്രഹം, എന്റെ കുഞ്ഞു ചിന്തക്കകത്ത് എന്റെ ആഗ്രഹം, എന്റെ യേശുവിനെ എത്ര നാളായി പറയുക വരുമെന്ന്, എന്റെ യേശുവിനെ എനിക്ക് കൺകുളിർക്കി ഒന്ന് കാണണം. क्योंकि बहुत साल से हम बोल रहा है यीशु मसीह आएगा, लेकिन उस समय पर जो है मेरे आंख भर कर यीशु को देखने के लिए मैं चाहता है. ആ സമയത്ത് ഞാൻ അറിയാതെ എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വരും. तो उसी समय पर मैं बिना जानते हुए मेरी आंखों से आंसू जरूर गिरेगा. आमीन. കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ, ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്ന് കഷ്ടതകളും പട്ടിണികളും നിന്ദയും ദുരിതവും രോഗവും ക്ഷയവും മാലിന്യമുള്ള ഈ ലോകത്തിൽ ഞാൻ നോക്കി വർഷങ്ങളായിട്ട് നോക്കിയിരുന്നപ്പോൾ ഇതാ എന്റെ പ്രാണപ്രിയൻ ആകാശത്ത് പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് എന്റെ കണ്ണ് നിറയും. क्योंकि हम बहुत साल से जो है प्रभु के लिए इंतजार कर रहा है. यीशु मसीह को जो कष्ट सहा है, यीशु मसीह के लिए निंदा सहा है, यीशु मसीह के लिए जो हर प्रकार को तकलीफ को हम सहा है, भूखे रहा है, नंगा रह रहा है, लेकिन जो है मेरी जो मसीह कब आया करके उसी सोच पर जो हम ऐसे जिंदगी बिताते हुए रहा है. जब यीशु को देखने के समय पर जो है हमारा आंखों से खुशी के आंसू जरूर उस समय पर गिरेगा. അന്ന് എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ എന്റെ അമ്മ കരഞ്ഞില്ലേ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച്? तो मैं जब इंग्लैंड से आने के समय पर मेरी माँ जो है मुझे गले लगाकर रोया था. അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തത് എന്റെ അമ്മയെ ഇങ്ങനെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ കണ്ണുനീരൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുടച്ചു കളഞ്ഞായിരുന്നു. मैंने क्या किया है, मेरे मम्मी को जो है मेरे पास खड़े करने के बाद उनकी आंखों से मेरे जो आंसू को पोंछ डाला है. आमीन. ഇതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ രണ്ടാമത് വരുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വരുമ്പോൾ യേശു എന്നെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് അവൻ എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരൊക്കെയും തുടച്ചു കളയും. अभी जो है यीशु मसीह जो है दोबारा आने के समय पर यीशु क्या करेगा, मुझे जो है अपना साइड में जो है खड़ा करने के बाद जो है गले लगाने के बाद जो है हालेलुया मेरी आंखों से आने वाला सारी आंसुओं को अपने हाथों से यीशु पोंछ डालेगा. हालेलुया. ആ തുടച്ചു കളയുന്ന കണ്ണുനീരായിരിക്കും എന്റെ അവസാനത്തെ കരച്ചിൽ. तो वो जो है पोंछ डालने वाला आंसू होगा मेरे जीवन का आखिरी वाला आंसू. हालेलुया. പിന്നെ കരച്ചിൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല. उसके बाद मुझे कोई प्रकार का आंसू नहीं आएगा. आमीन. എത്ര പേർക്ക് ആ പ്രത്യാശയുണ്ട്? कितने लोगों को उसी आशा है, उसी विश्वास है. आमीन. ऐसे तो ഇന്ന് ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോഴും കരഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കാം കേൾക്കുന്നത്. शायद ये जो संदेश सुनने के समय पर भी कुछ लोग जो है रो कर जो है इस संदेश को सुना हुआ होगा. പക്ഷെ ഒരു ദിവസം നിന്റെ കണ്ണുനീർ നിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് തുടച്ചു കളയുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. लेकिन जो है मैं एक ही से बोलना चाहते हैं, एक दिन जो है बहुत निकट है, उसी दिन पर आपके आंखों के सारी आंसू यीशु मसीह पोंछ डालेगा. हालेलुया. അതിനിപ്പുറത്ത് നീ ഒഴുക്കുന്ന ഓരോ കണ്ണുനീർ തുള്ളിക്കും സ്വർഗത്തെ ചലിപ്പിക്കുവാൻ, ദൈവത്തെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ, ദൂതനെ അയക്കുവാനുള്ള പവർ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത്. क्योंकि इसलिए आप जो है यीशु मसीह के सामने प्रार्थना के साथ गिराने वाला एक आंसू है, उस आंसू जो है स्वर्ग को अपने दूतों को अपने आपके घरों में भेजने की शक्ति है, और जो है आपके जिंदगी में अद्भुत का काम करने का शक्ति है उसी आंसू में. എല്ലാ കണ്ണുകളും അടയട്ടെ. अभी हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे.
Everybody close your eyes for a few seconds. सभी लोग 1 मिनट जो है अपने आंखों को बंद करें, सभी लोग, कोई भी आंख खोलकर जो है अपना मोबाइल को इधर जो ऐसे फ्लिप ना करे। आमीन। सब लोग आंख बंद करो। You may be a person who got a broken hearted and a bleeding heart. शायद आप ऐसे एक इंसान होगा जो टूटा हुआ हृदय से आज मेरी बातों को सुन रहा है। हालेलुया। പലപ്പോഴും ഹൃദയം വിങ്ങിപ്പൊട്ടി കരയുന്ന അവസ്ഥകൾ നിന്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായേക്കാം. शायद हो सकता है आप कूट कर जो है रोया हुआ दिन होगा आपका जीवन में। നിന്റെ കണ്ണുനീരിന്റെ ശക്തി എന്താണെന്ന് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞാട്ടെ. आपके आंसुओं का शक्ति क्या है करके आप जो है समझ ले। यस। ആരും നിന്റെ കരച്ചിൽ കാണുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. നിന്നെ കാണുന്ന ഒരു അദൃശ്യനായ ദൈവമുണ്ട്. आप ऐसे मत सोचो मेरी आंसुओं को कोई भी नहीं देख रहा है, लेकिन आपके आंसुओं को देखने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് ഒരു വര വരച്ചാൽ ആ വരയെ മറികടന്നു പോകുവാൻ എന്റെ സൃഷ്ടാവിന് സാധിക്കത്തില്ല. अगर जो है आप अपना आंखों के आंसुओं से एक लाइन लगाने से उस हमारा यीशु उस लाइन के आगे पार करके नहीं जाएगा, वहां पर आपके लिए रुकेगा। ഒരു നിമിഷം ആ നെഞ്ചത്തേക്ക് ആ വലത്തെ കൈന്ന് വെച്ചാട്ടെ. अगर आप अपना दाहिने हाथ जो है आपका छाती पर रखे। Let's pray to God. हम प्रभु से प्रार्थना करें। Hallelujah. Jesus Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus Lord. Jesus. Hallelujah. My Amen. Father. Jesus Lord. Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। കർത്താവേ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. प्रभु आज रात को प्रिय लोगों को हम समर्पण करके प्रार्थना करते हैं। Thank you Holy Spirit for speaking to us tonight Lord. प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र आत्मा हमसे बात करने के लिए धन्यवाद देते हैं। I pray over all my brothers and sisters who are listening to me and who are crying even till today Father. प्रभु जी आज मुझे सुनने वाला भाई बहनों के लिए जो लोग आज तक रोते हुए रहा है उनके लिए मैं प्रार्थना करते हैं प्रभु। Thank you for making us understand that there is a mighty power in our tears. प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, आपने हमें समझाने के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी आंखों के आंसू में एक बड़ा शक्ति छुपा है प्रभु। And more than that, we strongly believe that one day you're going to wipe away all our tears. Yes. प्रभु उससे भी अधिक हम विश्वास करते हैं प्रभु, वो अनोखा दिन भर जो है आप हमारा आंखों के सारे आंसुओं को प्रभु पोंछ डालेगा। हालेलुया। We are really longing and waiting for that day, Father. प्रभु उससे अनोखा दिन के लिए हम बहुत इंतजार से प्रभु हम प्रतीक्षा कर रहा है प्रभु। Thank you Lord and make us ready for that occasion. प्रभु धन्यवाद देते हैं उसी आगमन के लिए, आपका आगमन के लिए आप हमें तैयार करें प्रभु। Bless everybody who listen the word of God today night. प्रभु जी आज हमें सुना गया सारे भाई बहनों को प्रभु अब आशीष दे प्रभु। Thank you Jesus for listening our prayer. धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। In the mighty sweet name of Jesus we pray. Amen. और यीशु मसीह का शक्तिशाली नाम से और मीठा नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। Thank you so much for this amazing opportunity and thank you so much Pastor Jomon Thomas for an amazing translation. May God bless you, Sister Feba and Pastor Jacob and all the brothers and sisters who listened, and may God bless you abundantly, and again may God bless you. So प्रभु सभी लोगों को आशीष करे, जो पास्टर जैकब के लिए, पास्टर जोमोन के लिए भी ट्रांसलेशन के लिए, और जो सिस्टर फीबा के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपका परिवार को और जो अधिक रूप से आशीष करे। Praise the Lord. मेरे कारण वो कायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया, मेरे कारण वो कायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभाले, ओ जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभाले, कभी भी ना छोड़ेगा।
कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभाले। इस रात के समय हाथ उठा के हालेलुया, 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 हालेलुया। छोड़ेगा कभी भी त्यागेगा, ഓ കभी भी ഒരുപോലും ഒരു നാളും കൈവിടത്തില്ല. ഓ കभी भी, yes father, ओ जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। ओ हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया। Yes, Father, thank you, Father. Oh, nani, hallelujah, hallelujah, hallelujah. विश्वे हालेलुया। प्रभु आपकी सामर्थ, हालेलुया। हमारा आंसू को ऊपर गिरने वाला आपकी सामर्थ परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। ओ कितना अनमोल है, हालेलुया। हमारे एक एक आंसू कितना अनमोल है। प्रभु उसको अपने कुप्पी में सुरक्षा में रख रहे। धन्यवाद देते जाओ, प्रभु को धन्यवाद देते जाओ। एक और मिनट हाथ उठा के, एक और मिनट। हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord. Thank you, thank you, thank you so much. जो